morning, ma'am. Now we will move with the racial utopia. Before that, let's quickly recapitulate in the previous classes what we have done, that how in 1939 Germany attacked on Poland and occupied that country. It started the Second World War. 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई. उससे पहले what the Hitler has done, that from 1933 when he became the chancellor, from 1933 to 1938 he had only segregated the people. How he had segregated? डिजायरेबल्स हैं, अनडिजायरेबल्स हैं, जर्मन्स हैं, आर्यंस हैं या ज्यूज हैं, पोलिश हैं, रशियन हैं, इन सबको सेग्रीगेट किया. 4-5 साल उसने सेग्रीगेशन में लगाए. 1939 में उसने पोलैंड ऑक्यूपाई कर लिया. पोलैंड में अब उसने अपनी लेबोरेटरी बना ली, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना लिए, वहां पर गैस चैम्बर्स बना लिए. इट मींस लोगों को टॉर्चर करने के लिए जो भी उसकी चीजें थी वो सारी की सारी पोलैंड में सेट कर दी. फ्रॉम 1939 टू 1945 now the mass killing or genocide, it was being carried out in Germany. What he did when he attacked on Poland, now the Polish people, they were called the Polish people also, they were also called the Poles. They were forced to leave their homes. Whatever property they had left, that was occupied by the German people. और ये जो लोग थे जो पोल्स थे, they were कैसे herded like the cattle and they were treated, they were declared as the undesirables and many of the Polish people were murdered in large number. And how the Polish children were looked like, जो Polish children थे, जो छोटे बच्चे थे पोल्स जो थे, उनके साथ क्या किया गया कि जो थोड़े बहुत जर्मन लगते थे, जो ब्लू आइड जर्मन लगते थे या ये लगता था कि शायद इनका कहीं जर्मनी से कनेक्शन है, तो दे वर स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स एंड दे वर गिवन टू द रेस एक्सपर्ट्स. उस समय उसकी एक कैटेगरी होती थी लोगों की, या एक पोस्ट होती थी रेस एक्सपर्ट्स की. उनका काम क्या होता था, ये डिसाइड करना कि ये पर्सन जो है जर्मन रेस को बिलोंग करता है या नहीं करता है. तो ये जो रेस एक्सपर्ट्स थे वो देखते थे कि ये बच्चा जो है ये जर्मन ओरिजिन का है या नहीं है, या आर्यन है या नहीं है. अगर वो आर्यन होता था या जर्मन ओरिजिन का होता था तो उसे किसी जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था कि वो अब इसे पालेंगी. एंड इफ दैट चाइल्ड वाज नॉट, इफ द रेस एक्सपर्ट्स डिक्लेयर्ड दैट दिस चाइल्ड इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद द जर्मन, तो उन्हें ऑर्फनेजेस में डाल दिया जाता था. एंड फ्रॉम द ऑर्फनेजेस they were further sent to the gas chambers, जहां पर इन बच्चों को गैस चैम्बर्स में ही मार दिया जाता था. So ये स्ट्रैटेजी जो थी जूस की, स्ट्रैटेजी जो थी हिटलर ने अडैप्ट की कंट्री में, so as to spread the ideology of the Nazis. What further he did, he was very much interested in the youth of the country. उसको ये लगता था कि जो यूथ है, यूथ को कंट्रोल कर लिया है, इट मीन्स कि जो कंट्री है वो बहुत इजीली प्यूरिफाई हो सकती है. एंड हाउ इट वॉज डन कि उसने जो उस समय का यूथ था उसको कंट्रोल करना शुरू किया, उस बच्चों को कंट्रोल करना शुरू किया और उसने स्कूलिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस किए. स्कूलिंग सिस्टम में क्या चेंजेस किए कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हु वर अनडिजायरेबल्स, they were removed. The children who were the undesirable, they were also thrown out of the school. Only the desirables or the German students were allowed to be there in the schools. Plus the syllabus, the textbooks, these were rewritten. जितनी भी बुक्स थी उनको दोबारा लिखा गया और उसमें एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, that was the racial science. That was introduced so as to inculcate the hatred towards the Jews. कि बच्चों में ही उस समय Jews के प्रति जो एक hatred था, that was inculcated at the school level only. Children were taught to be aggressive, to be violent. बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था कि उनको वायलेंट होना है, उनको एग्रेसिव होना है और ऐसे स्पोर्ट्स उनको दिए जाते थे. बॉक्सिंग है कि बिलीव कि अगर बॉक्सिंग बच्चा करेगा तो उसमें एग्रेशन जो है वो ज्यादा आएगा. जितना बच्चा एग्रेसिव होगा उतना ज्यादा वो अपनी कंट्री के लिए सपोर्टिव होगा. तो ये
हिटलर के ही प्रेज में सारी जो टेक्स्ट बुक्स थी वो रीराइट की गई। इवन जो स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स के थ्रू भी बच्चों में वायलेंस या एग्रेशन जो था वो अच्छी तरह से आप कह सकते हैं इनकलकेट किया। उसके बाद उसने एक और स्टेप ये उठाया कि जब बच्चा 10 इयर्स का हो जाता था तो ही हैड टू ज्वाइन अ जंप वॉक। जंप वॉक क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जो छोटे बच्चों के लिए था। सो फ्रॉम 10 to 14 years द चाइल्ड यूज्ड टू बी देयर इन जंप वॉक। फ्रॉम 14 to 18 years द चाइल्ड हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता था टू बी अगेन एग्रेसिव, टू वर्शिप द वॉर, टू हेट द ज्यूज, टू कंडेम द डेमोक्रेसी, टू हेट द जिप्सीज और द कम्युनिस्ट और द पोलिश पीपल और द रशियन, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड these people, these children, they were also getting the physical training also. तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला जाता था और दूसरी तरफ उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। एंड आफ्टर 18 years द चाइल्ड हैड टू सर्व इन जर्मन आर्मी। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हर कंट्री का अपना एक तरीका होता है डिफेंड करने का या उनके डिफेंसेस का। अब हमारी कंट्री में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आर्मी में डालना ही। मैंने आपको सिंगापुर का एग्जांपल दिया था कि आफ्टर अटेनिंग द age of 18 years the male child has to serve in the army for 3 years, and that's a compulsion on the parents also. No other option is there. The child will opt for any other job only after the child attains the age of 21 there. So ऐसा ही जर्मनी में था कि it was compulsory for them to serve in the army. So इस ढंग से उसने यूथ को कंट्रोल किया। Not only the youth was controlled, but also he started working from grassroots level. The time when the child was about to born, since that time the hatred towards the particular communities were inculcated. So now he targeted the mothers of the country. No doubt he had said कि in his country the mothers are very important, but still the mothers were not at all treated equally in the country. He was having a view कि उस समय क्या था कि पूरी वर्ल्ड में there was a struggle by the women organizations थी जो struggle कर रही थी to get the right to vote or to get the equal rights. He said कि okay, it is going on as per the democracy and democracy accepts it, but this is wrong. He believed that there is again no equality among the people. Equality हो ही नहीं सकती है, मेल फीमेल्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। That was the perception or the view of the Hitler. He believed that men and women, they are totally different. The boys are to be aggressive, masculine, and they should be very strong-hearted, whereas the girls, they were told to become the good mothers. ये एक व्यू पॉइंट लेकर हिटलर जो था वो चल रहा था। एंड द गर्ल्स दे वर आल्सो सपोज टू बियर द प्योर आर्यन और प्योर ब्लडेड आर्यंस। एनीहाउ द women of Germany at that time, they were you can say treated in a very different manner. How it was there that the women who was bearing the pure blooded Aryans, they were rewarded, and the women who was not bearing the child of the desirables or the Germans, they were punished very badly. The women who were in connection with the Jews or the Gypsies or the Polish people, they were punished badly. Even their families were also punished. Many a times they had their shaved heads or their faces were blackened, and even they used to be, you can say, having the placards in their hanging in their necks, and it was written that I have bullied or I have sullied the honor of the nation. And they were also sent to the jails. They were also murdered. They were also many a times sent to the gas chambers. Whereas on the other hand, the ladies or the women who was bearing the Aryan child or the pure blooded Aryans, they were rewarded also. They were given special treatment in the hospitals. They were even
given the concessions in their treatment. They were also given the concessions in the shops or the movie halls or the theaters or even railway fares. And even to produce more and more pure iron-blooded people or the children, more rewards were given. How the rewards were given? Or the women was honored even. If she gave birth to a ardent child, she was awarded, and if she had given birth to 4 children, a bronze cross was given. If 6 children, then the silver cross was given to her, and if she had given birth to 8 or more pure-blooded Germans, then she was given the gold cross. This thing was being done only to encourage the women to produce more and more German people, so that the population of the German people was to be increased. And reason was that half of the country was already either killed or expelled from the country. Right? Undesirables बना के कितनी population तो उसने वैसी country से या तो बाहर निकाल दी या मार दिया. तो population already Germany की काफी कम हो चुकी थी. तो in order to increase the population, such type of awards and honors were given. So ये उसकी strategy थी to increase the population of Germans and to make this clan or race the powerful one. Right? And in order to make it a powerful one, उसने बाकी जितनी भी races थी उनको उसने पूरी तरह से eliminate कर दिया, physically eliminate कर दिया, और उनको या तो country से बाहर निकाल दिया या उनको मार दिया. So mass killing was there in Germany at that time. And the art of propaganda we will do in the next class. Right? So if you are having any of the doubts,